Hey genius, welcome back to the lecture 4 part C of the series Periodic Table and Periodic Trends. In the last two videos, we have learned mnemonics for S block element, mnemonics for P block element, and in the last video we have learned mnemonics for D block elements along period. Now in this video, we are going to learn mnemonics for D block elements along group and mnemonics for F block elements, both in Hindi and English. So without wasting any time, let's start. So these are the D block elements, and now we are going to see them as or along period, along row, and we are going to have our mnemonics along row. So first comes this 3D. अभी 3D सीरीज में हमारे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो इसको कैसे याद रखना है? तो एक कुआं है, उस कुआं में एक छोटी सी बच्ची गिर गई है जिसका नाम है जिंकी। पर उसमें क्या है, ऊपर बहुत सारे पत्थर वत्थर रखे हुए हैं कुआं के ऊपर। तो कोई भी आम आदमी उसको निकालने जाएगा तो वो पत्थर वगैरह कुआं में गिर सकता है और उसमें जिंकी को चोट लग सकता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, शक्तिमान मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आम आदमी आप लोग ट्राई मत करो, मैं आ रहा हूं। तो लोग चाह रहे हैं उनको निकालना खुद से, बट शक्तिमान मना कर रहे हैं, बोले नहीं मैं आके निकालूंगा, आप लोग मेरे ऊपर छोड़ो, मैं उसको सेफली निकालूंगा। तो शक्तिमान करे मना, फिर कौन निकाले कुआं से जिंकी को? क्योंकि शक्तिमान ने मना किया है तो कोई नहीं निकाल सकता कुआं से जिंकी को। शक्तिमान करे मना, फिर कौन निकाले कुआं से जिंकी को? शक्तिमान में आपको याद रखना होगा, इसमें आएगा 3 एलिमेंट्स, Sc स्कैंडियम, यहाँ पे Ti से टाइटेनियम और V से वेनाडियम। कड़े में आप याद रख सकते हो CnR क्रोमियम, मना से आप याद रख सकते हो मैंगनीज Mn, फिर से आपको याद रखना होगा Fe आयरन, कौन में Co, कौन से Co याद रखना होगा कोबाल्ट, एंड निकाले से Ni निकेल, कुआं से, कहां से ना, कुआं में Cu आता है तो Cu से होगा कॉपर, कुआं से जिंकी को, सो जिंकी में आएगा Zn से जिंक। तो क्या हुआ, कुआं में जिंक गिर गई है, तो आसपास में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं कुआं के ऊपर, तो नॉर्मल आदमी, आम आदमी ट्राई करेंगे तो पत्थर वगैरह गिर सकता है जिंकी के ऊपर। तो इसलिए शक्तिमान मना कर रहा है कि आप लोग मत करो कुछ। तो शक्तिमान करे मना, फिर कौन निकाले कुआं से जिंकी को? अभी 3D सीरीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये किसी और टीचर ने किया है, बनाया है ये, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो यूट्यूब में मैंने देखा था, तो इसमें क्या हुआ ना, ये एक स्कूल में बच्चा है, 10th क्लास का एक बच्चा, उसको एक लड़की पसंद है। तो अभी वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा है, वो क्या बोल रहा है कि देखो तुम, मतलब ये लड़की बहुत अच्छे दिखने में है, तो लड़के मरते हैं उसमें, तो लड़के प्रपोज भी करते हैं और वो रिजेक्ट करती है। तो वो लड़का क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखो तुम मेरे से शादी कर लो, फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो ये नियम ऐसा है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई ना कहेगा जानू। मतलब देखो तुम मेरे साथ विवाह कर लो, तो फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें जानू जानू नहीं बोलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी नियमन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई ना कहेगा जानू। तो सुनो से आपको याद रखना होगा स्कैंडियम, तुम में आएगा टाइटेनियम, विवाह से आपको याद रखना होगा वी फॉर वेनाडियम, कर लो से क्रोमियम Cr, मुझसे में आपको याद रखना होगा मैंगनीज Mn, फिर से Fe, कोई से Co कोबाल्ट, ना ना कहेगा, इसमें आपको याद रखना होगा कि निकेल आएगा इसमें, कहेगा से Cu याद रखना होगा कॉपर, एंड जानू जानू से Zn जिंक। तो वो बच्चा एक अनोखे रूप में प्रपोज कर रहा है लड़की को, वो डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोल रहा है कि देखो तुम मेरे साथ शादी कर लो तो तुम्हारे फायदा ही है, तुम्हें कोई और लड़का डिस्टर्ब नहीं करेगा।
तो इसलिए वो लड़का बोल रहा है कि सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई ना कहेगा जानो। Okay, now we will see this 3D series in English. So in 3D series we have scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Now how to remember is, remember there is a person or there is a science teacher whose name is Vivek Kriplani, and there is another person whose name is William or something, just remember. So he is the manager of fog company. So both were there in the bar, and then there was an argument in between those two, and they started fighting. So that science teacher and that manager of the fog company, they started fighting. And while the fight, that science teacher Vivek Kriplani, he hits the manager, and he hit in the cuticle zone. So you have to remember, science teacher Vivek Kriplani hits manager of fog company near cuticle zone. So from the science, you have to remember this. SC stands for scandium. Teacher, from this teacher you can remember titanium. From this Vivek, it starts with V. So from V you have to remember vanadium. And Kriplani, in the Kriplani you can see Cr. So Cr stands for chromium. And from the manager you will get Mn, Mn for manganese. Fog company. So from fog you have to remember Fe. Fe represents iron. And company, from the company you will have Co. Co stands for cobalt. Near, from near you can remember Ni for nickel. In which zone? Cuticle zone. From the cuticle, Cu will be there. So from Cu you have to remember copper. And the zone Zn, from the Zn you have to remember zinc. So science teacher Vivek Kriplani hits manager of fog company near cuticle zone. And this part is actually called cuticle. This white part in the finger is called cuticle. Now if we see an alternative version of this mnemonics to remember 3D series, so we can say uh, the science teacher, that teacher is a very cruel person and very bad person, or he does bad stuff, bad things. So in a couple zone, there is a couple zone near the sea beach, and in that zone, you cannot feel or you cannot drink coke. Okay, so that is forbidden in that zone. But because that science teacher is a very bad person, so he feels coke near that couple zone. So that's how you can remember that science teacher, very cruel man, feels coke near couple zone. Because he is a very cruel person, very bad person, so he violates the law and he does all this wrong stuff. So what he does? So science teacher, very cruel man, feels scope near couple zone. So from here, SC stands for scandium. From the teacher you have to remember Ti. Ti stands for titanium. From the very V, V represents vanadium. And cruel, in the cruel you will have C and R. So this Cr stands for chromium. Don't get confused with this uh, cruel Cr and Co. So Cr comes first, then Co comes. So from the cruel you will remember Cr for chromium. Then from the man you have to remember Mn stands for manganese. Now he feels coke, so feels Fe stands for iron. Coke, Co stands for cobalt. And near, in the near you have to remember Ni stands for nickel. Couple, in the couple you have C and U, so that will give you copper. And zone, Zn stands for zinc. So in this 3D series, so chromium, cobalt and copper, these three don't get confused with the positions of these three. So you have to remember this cruel man, cruel comes first, so Cr will come first, and then in coke, Co, it will come in the middle, and then copper or couple zone, in couple you have C and U, so that copper will come at the end. तो चलिए अभी देखते हैं 4D सीरीज को। तो 4D सीरीज में हमारे पास है इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम,
टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। तो ये 10 एलिमेंट है 4D सीरीज में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी इंडिया में कुछ कुछ लोग बैंक से पैसा लेके लोन लेके फरार हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे कंट्री में ही होगा ये सब चीज़। कुछ ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ परसेंटेज लोग तो रहते ही हैं जो इलीगल काम करते हैं और बुरे काम करते हैं, तो हर कंट्री में होता है। तो ऐसे ही इंडिया में जो नीरव मोदी हैं, हम सब जानते हैं, वो इंडिया से काफ़ी पैसा लेके फरार हो चुके हैं, दूसरे कंट्री में चले गए हैं। तो क्या हुआ, तो वो नीरव मोदी ने जिस अ, जिस एयरपोर्ट और जिस प्लेटफॉर्म से टिकट लिया था, वो आपको दिख गया, पता चल गया। उस प्लेटफॉर्म देख के आपको पहले से पता था कि इस प्लेटफॉर्म से लिया है, और आप जब जा रहे हो उस प्लेटफॉर्म में, तब आपको प्लेटफॉर्म देख के पता चल गया कि अच्छा, यहाँ से ही नीरव मोदी ने टिकट लेके लिया था। तो अब ऐसे याद रखो कि इस काउंटर से नीरव मोदी ने टिकट लिया था, और टिकट लेके वो रशिया में चले गए, रशिया में उड़ के चले गए। तो उस टिकट काउंटर के पास जाके आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो यहाँ से जरूर नीरव मोदी टिकट लिए रशिया के राह पर आगे चले गए। तो आप उस काउंटर के सामने गए हो, काउंटर से आपको पता चल गया कि यहाँ से ही नीरव मोदी भागा था। तो आप बोल रहे हो यहाँ से जरूर नीरव मोदी टिकट लिए रशिया के राह पर आगे चले गए। तो यहाँ से में है वाई, वाई स्टैंड फॉर इट्रियम। जरूर में आएगा जेड एंड आर, जेड आर से आपको याद रखना होगा जर्कोनियम। और कौन ना, नीरव मोदी। सो नीरव में आएगा एन एन बी, एन एन बी से आपको याद रखना होगा नायोबियम। मोदी में आएगा एम ओ, एम ओ से मोलिब्डेनम। टिकट लिए तो टिकट में आएगा टी एन सी, टी एन सी से होगा टेक्नीशियम। और कहाँ चले गए, रशिया में। तो रशिया में आएगा आर यू, आर यू स्टैंड फॉर रुथेनियम। और रशिया के राह पर, तो राह में आएगा आर एन एच, तो आर एच स्टैंड फॉर रोडियम। तो इस जगह पे कंफ्यूज मत होइएगा, रुथेनियम कम्स फर्स्ट देन रोडियम। तो आर यू पहले आएगा फिर आर एच। और रुथेनियम या रुथेनियम देन रोडियम। और राह पर में आएगा पी एन डी, सो पी डी से पैलाडियम। आगे आगे में आएगा ए जी, सो ए जी स्टैंड फॉर सिल्वर। आगे चले गए, तो ये चले से आपको याद रखना होगा, इसमें सी है तो सी एन डी कैडमियम। तो यहां से जरूर नीरव मोदी टिकट लिए रशिया के राह पर आगे चले गए। नाउ एक और ऑल्टरनेटिव वर्जन देखते हैं। तो ऑल्टरनेटिव वर्जन में हम कैसे याद रख सकते हैं 4D सीरीज को, कि दो दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं, बचपन से दोस्त हैं, बहुत सालों के दोस्त हैं। और जब ये दोस्ती बहुत सालों की हो जाती है ना, मतलब इसमें रूठना, मनाना, झगड़ा करना, फाइट करना, सब कुछ बहुत कॉमन हो जाते हैं। बट अच्छे दोस्त और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो इन सब के बावजूद भी एक दूसरे को हेल्प करें। कितना भी झगड़ा हो, आपको पता है कि आपको जब जरूरत होगा वो दोस्त आपके लिए खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही आप अपने जो दोस्त है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, उसको आप बोल रहे हो कि यारी जरूर निभाना मौत तक, रूठे रोए पर आगे चले। तो आप अपने दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे हो कि दोस्त, मेरे साथ रहना हमेशा, हमारे जिंदगी के लास्ट तक। जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी हम एक दूसरे से रूठ जाए, जितना भी हम झगड़ा करें, रोए, फिर भी हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। तो अब ऐसा बोल रहे हो कि यारी जरूर निभाना मौत तक, रूठे रोए पर आगे चले। तो यारी में आएगा वाई, सो वाई से आएगा इट्रियम। जरूर में आएगा जेड आर, जेड आर से आएगा जर्कोनियम। निभाना, निभाना में एन एन बी है, तो एन बी से आएगा नायोबियम। मौत, मौत में आएगा एम ओ, एम ओ से आपको याद रखना होगा मोलिब्डेनम। तक, तक में आएगा टी एन सी, टी सी से आपको याद रखना होगा टेक्नीशियम। और रूठे रोए, तो रूठे में आपको आर यू आ रहा है, तो आर यू से आपको याद रखना होगा रुथेनियम। और रोए, रोए में आर एच आप याद रख सकते हो, तो आर एच स्टैंड फॉर रोडियम। पर, सो पर में आएगा पी एन डी, पी डी से पैलाडियम। आगे, आगे में आएगा ए एन जी, ए जी स्टैंड फॉर सिल्वर। चले, चले से आपको याद रखना होगा कैडमियम, सी डी। तो यारी जरूर निभाना मौत तक, रूठे रोए पर आगे चले।
Next, let's see this 4D series in English. So in 4D series, we have yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, and cadmium. Now, how to remember this? So in the jungle, there was an angry crocodile, and that angry crocodile, you all know that crocodile eats everything, whichever animal comes near the pond or the lake, he will just eat it. So what happened? The entire jungle got united, and they thought that they will give a lesson to this crocodile. So that's why this yak, zebra, numbat, monkey, all those came together, and then they discussed. Then they came up with a way that how to punish that angry crocodile. So after the meeting, they took a rusty road, and from that road they went, and then um the crocodile was not expecting them to come from that road. These all animals went from the rusty road, and then they hit the crocodile from the behind, and the crocodile died there. So how you can remember? You can remember yak, zebra, numbat, monkey took rusty road to punish angry crocodile. This crocodile was very angry and very bad. He used to eat everyone. So that's why all these uh, animals, yak, zebra, numbat, monkey, all they came together, and then they punished that crocodile. So yak, zebra, numbat, monkey took rusty road to punish angry crocodile. Now from this yak, Y is there. So Y stands for yttrium. Zebra, in the zebra we have Z and R. ZR stands for zirconium. And numbat. Numbat, in the number we have N and B. So NB stands for niobium. Monkey. So from the monkey, MO stands for molybdenum. Now in this took you have to remember it's T and C. So TC stands for technetium. Rusty road. So rusty, in the rusty there is R and U. RU stands for ruthenium. Road, in the road you have to remember RH. RH stands for rhodium. To punish, in the punish you have to remember PD. PD stands for palladium. Angry crocodile. So in angry we have ANG. AG stands for silver. And crocodile, C and D. So CD stands for cadmium. So yak, zebra, numbat, monkey took rusty road to punish angry crocodile. तो चलिए अब हम देखते हैं 5D सीरीज और हिंदी में। 5D सीरीज में हमारे पास है लैंथनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टेन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो इसको कैसे हम याद रख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, एक बच्चे को बुली कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम सब सीनियर है तुम लोगों के, तो तुम्हें हमें हफ्ता देना होगा। अगर हफ्ता नहीं दोगे तो हम लोग और हमारे दोस्त लोग तुम्हें मारेंगे और पीटेंगे और फिर हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तो सीनियर्स आए हैं जूनियर को बुली करने और फिर बोल रहे हैं कि ला हफ्ता, वरना रेजाउल, ओस्मान एंड इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। तो अगर हफ्ता नहीं देगा तो तेरे को हम पहले पीटेंगे और फिर तेरे ऊपर हंसेंगे। तो गाइज, बुली करना सबसे गंदी बात है, और अभी रिसेंटली तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, या फिर बहुत से बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी रैगिंग होता है, और बच्चों एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं उसके बाद उस रैगिंग को झेल ना पाके। और ऐसा काफ़ी सारी चीज़ मुझे खुद पता है, काफ़ी सारे स्टोरीज पता है मुझे, और काफ़ी सारे चीज़ें सोसाइटी में मैंने देखा है खुद। तो ये बुली करना या फिर रैगिंग करना बहुत खराब बात है, बहुत ही खराब बात है, किसी को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना। तो प्लीज़ 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 ये सब कुछ मत करना। दिस इज़ जस्ट टू रिमेंबर दिस 5D सीरीज। और लाइफ में कभी भी किसी के भी साथ, कोई कितना भी वीक हो, किसी के भी साथ बुरा या अन्याय मत करना। तो जस्ट रिमेंबरिंग पर्पस में हम ऐसा करके याद रखेंगे कि ये सीनियर्स अपने जूनियर को जाके बोल रहे हैं कि हफ्ता दे वरना हम पीटेंगे और हंसेंगे। बट अपने लाइफ में कभी भी ये चीज अपने जूनियर्स के साथ मत करना। ओके, सो ला हफ्ता, वरना रेजाउल, ओस्मान एंड इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। तो ला हफ्ता में आएगा ला स्टैंड्स फॉर लैंथनम। हफ्ता में आपको याद रखना होगा दो एलिमेंट,
हाफनियम एंड टेंटलम। वर्ना में आएगा डब्लू, डब्लू से आपको याद रखना होगा टंगस्टेन। और कौन कौन ना, रेजाउल, रेजाउल में आएगा आरी, आरी से रेनियम। फिर ओस्मान, ओस्मान में ओएस, ओएस से ऑस्मियम। एंड इरफान, इरफान से आईआर, आईआर से इरिडियम। पहले क्या करेंगे, पहले पीटेंगे, तो पीटी में आएगा, पीटेंगे में आएगा पीटी, पीटी से प्लेटिनम। और उसके ऊपर हंसेंगे तो और में ए यू आर, और ए यू से आपको याद रखना होगा गोल्ड। और हंसेंगे में एच और जी, तो एच जी से आपको याद रखना होगा मरकरी। तो ला हफ्ता वरना रेजाउल, ओस्मान एंड इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। Now let's see this 5D series in English. So in 5D we have lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury. So there's a football match going in between Brazil and Australia, and Brazil was performing very well, and they were scoring in the first half time. They scored few goals. So what happened? So the game was going to be one-sided. The Brazil was dominating over the Australian team. So what happened in the first half? They already scored 2 goals. So in the next half, the Australian team got high pressure that they have to give back those goals. They have to equalize those goals. So last half time, so you can remember like this, that last half time went remarkable. Oscar and Irfan put Aussies in high pressure because Oscar and Irfan, they scored 1-1 goal. So Brazil has 2 goals and they have a lead of 2-0. And that's why in the next half or in the second half, this Australian team got high pressure. So last half time went remarkable. Oscar and Irfan put Aussies in high pressure. So in the last we have LA. LA stands for lanthanum. Half, the half you can see H and F, HF, or if you remember the entire half, you can remember hafnium. So from the half you can remember hafnium. Time you have to remember Ta. Ta stands for tantalum. Vent, W is the first letter of this vent, so W stands for tungsten. Remarkable, and remarkable, Re is there, so Re stands for rhenium. And who scored the goal? Oscar. Oscar scored the first goal. So Oscar, OS, OS stands for osmium. And the second goal was scored by Irfan. So Irfan, IR, IR stands for iridium. Put, PT, PT stands for platinum. Aussies, AU, AU stands for gold. In high pressure. So in high, we have H and G. So HG stands for mercury. So in the match, what happened? Brazil team got lead and they put the pressure to the Australian team. Last half time went remarkable. Oscar and Irfan put Aussies in high pressure. नेक्स्ट अभी हमारे पास है 6D सीरीज। तो 6D सीरीज में क्या क्या है? एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जेनियम, बोरियम, हेसियम, मेटनरियम, डमस्टर्डियम, रोन्जेनियम एंड कोपर्निसियम। तो ये सारे एलिमेंट और ये 10 एलिमेंट है हमारे पास 6D सीरीज में। तो कैसे याद रख सकते हो? ये दोनों हैं इंडिया के फेमस टीवी सीरियल एक्ट्रेस। तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों बिग बॉस में साथ में भी आए थे, कंटेस्टेंट बने थे और काफी अच्छी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। तो वही बिग बॉस के बाद ये दोनों गप्पे शप्पे कर रहे हैं रश्मि के घर में, उनके छत में जाके। तो घर के छत में जाके दोनों गप्पे कर रहे हैं और नीचे से उनका पापा आए, रश्मि जी के पापा आए और फिर वो बोल रहे हैं कि अच्छा दोनों बैठ के गप्पे शप्पे कर रहे हो, हंसी मजाक चल रहा है, चलो जाओ मार्केट से मेरे लिए डर्मिकूल का बॉटल लेके आओ। तो रश्मि के पापा को डर्मिकूल का बॉटल चाहिए, तो इसलिए वो लेके आने के लिए बोल रहे हैं रश्मि को। तो पापा के क्या बोल रहे हैं? पापा के बोल रहे हैं कि अच्छा रूफ पे देवों के संग बैठ के हंस मत। मतलब वो जो हंसी मजाक कर रहे थे वो लोग, तो पापा थोड़ा गुस्सा होकर बोल रहे हैं कि देवों के साथ बैठ के भी हंस मत, डर्मिकूल का रंगीन कंटेनर ला। मतलब जा मार्केट से डर्मिकूल का बॉटल खरीद के ला। तो फिर से हम देखते हैं कि क्या हुआ न। रश्मि एंड देवोलीना, तो वो लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे छत पे।
तो रश्मि के पापा आके छत पे बोल रहे हैं कि अच्छा रूफ पे देबो के संग बैठ के हंस मत, डर्मी कूल का रंगीन कंटेनर ला। तो अच्छा में आएगा एसी, एसी से याद रखना होगा एक्टिनियम। रूफ, रूफ में आएगा आरएनएफ, आरएफ से याद रखना होगा रदरफोर्डियम। और रूफ पे देबो के संग, तो देबो में डीएनबी, डीबी से आता है डबनियम। संग में आएगा एसएनजी, तो एसजी से आपको याद रखना होगा सेबोर्जिनियम, सेबोर्जियम। और बैठ के कैसे है ना, वो लोग बैठे हुए हैं, तो बैठ के बी एन एच, बी एच से आपको याद रखना होगा बोरियम। हस, हस से आपको याद रखना होगा हैसियम, या जो एच एस हैसियम। मत, मत से आपको याद रखना होगा एम एन टी, एम एन टी स्टैंड फॉर मेटनरियम। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ना, डर्मी कुल का रंगीन कंटेनर ला। सो डर्मी में आएगा डी एस, डी एस आपको याद रखना होगा, या फिर आप याद रख सकते हो डर्मस्टर्डियम, जो ये जो डी ए आर एम पहले 4 लेटर हैं उससे भी आप याद रख सकते हो डर्मस्टर्डियम। डर्मी कुल का रंगीन, तो रंगीन में आएगा आर एन जी, तो आर एन जी, आर जी स्टैंड फॉर रॉन्टजेनियम। एंड कंटेनर ला, तो कंटेनर में आएगा सी एन ई, सॉरी सी एन एन, सो सी एन स्टैंड फॉर कोपर्निसियम। तो अच्छा रूफ पे देबो के संग बैठ के हंस मत, डर्मी कूल का रंगीन कंटेनर ला। So now we will see the 6D series in English. So in 6D we have actinium, rutherfordium, dubnium, seborgium, borium, hessium, meitnerium, darmstadtium, roentgenium and copernicium. So how to remember this? So remember, so there was a contest, and in that contest, as a fun contest, so in that contest there was also prize, first, second, third prize distribution was there. So in that contest, Rutherford and Rontgen, they participated together as a team. So in that team-wise contest, so Rutherford, he actually messed up. He did a bad acting. He forgot his part, and then his singing also he forgot. So both the mistakes, because of both the mistakes, wrong acting and wrong singing or doubtful singing, so both Rutherford and Rongen, they got dismissed from the contest. So there was no, um, I mean, Rongen didn't have any fault, but still because of Rutherford's fault, he got dismissed from the contest. So you have to remember that act of Rutherford. So both his acting and singing, doubtful singing, because of those two reasons, they got dismissed. So you can remember that act of Rutherford, doubtful singing, both his mistakes, dismisses Rontgen from contest. So Rutherford's act and doubtful singing, both the mistakes, dismisses Rontgen from the contest. Now let's see, in the act we have AC, AC stands for actinium. Rutherford, in the Rutherford, from the Rutherford you can remember Rutherfordium. Doubtful singing, so in the doubtful we have D and B, so DB stands for dubnium. Singing, S and G, S and G stands for seborgium. Both, in the both we have B and H, so BH stands for borium. His, in the his we have H and S, so HS stands for hessium. Mistakes, M and T, so M and T stands for meitnerium. Dismisses, D and S, so DS stands for Darmstadtium. Rontgen, so RNG stands for, or you can remember this entire name from this Rontgen, you can remember Rontgenium from contest. So in contest we have C and N, so CN stands for Copernicium. So act of Rutherford and doubtful singing, both his mistakes, dismisses Rontgen from contest. So this is how you can remember the 6D series. Now we will look into F block elements. So in the F block, we have only these two series, lanthanides and actinides. So we will see mnemonics for these two, lanthanides and actinides. तो अभी हम देखते हैं lanthanides और 4F series in हिंदी.
तो 4f सीरीज में हमारे पास है सीरियम, प्रसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड लुटेशियम। तो हम कैसे याद रख सकते हैं इसको ना? ऐसा है कि 4 दोस्त जो जॉन सेना, प्रभास और उनके साथ पैमी एंड सिमी, तो ये चारों लोग यूरोप में गए हैं और यूरोप में वो डाइनिंग कर रहे थे ग्राउंड टेबल में बैठ के। उनमें एक संडे के दिन वो यूरोप में गए हैं, ग्राउंड टेबल में बैठ के अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। और उनका मेन डिश क्या था? मेन कोर्स में था टमाटर वाला यबी। सो दिस थिंग इज कॉल्ड टमाटर यबी, दिस डिश। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे से हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं यूरोप में, ग्राउंड टेबल डाइनिंग करके, और वहां पे जाके टमाटर यबी खा रहे हैं या फिर टमाटर यबी का मजा ले रहे हैं। तो ऐसे याद रखना है कि सेना, प्रवास एंड पैमी सिमी यूरोप के ग्राउंड टेबल डाइनिंग में हॉलीडे एंजॉय किया टमाटर याबी लूट के। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा करके खाया, टमाटर याबी उनको बहुत ज्यादा पसंद आया और ऐसे करके उन्होंने हॉलीडे एंजॉय किया ग्राउंड टेबल डाइनिंग करके। तो आपको याद रखना है कि सेना या फिर चलो जॉन सेना, प्रवास एंड पैमी सिमी यूरोप के ग्राउंड टेबल डाइनिंग में हॉलीडे एंजॉय किया टमाटर यबी लूट के। तो सेना में आएगा सीई, सीई से आपको याद रखना होगा सेरियम। प्रवास में आएगा पीएनआर, पीआर से आपको याद रखना होगा प्रेसिडियोडाइमियम। एंड में लास्ट में है एनडी, सो एनडी से आपको याद रखना होगा नियोडाइमियम। पैमी में आएगा पीएम, पीएम से प्रोमेथियम। सिमी में आएगा एसएम, एसएम में समारियम। यूरोप, यूरोप से आपको याद रखना होगा यूरोपियम, जो कि इजी है, यूरोप से ही यूरोपियम आएगा। और ग्राउंड, ग्राउंड में है जीडी, ग्राउंड टेबल के ग्राउंड में है जीडी, जीडी से आपको याद रखना होगा गैडोलिनियम। और टेबल में है टीबी, टीबी से आपको याद रखना होगा टर्बियम। डाइनिंग, डाइनिंग में डीवाई आपको याद रखना होगा और डीवाई से याद रखना होगा डिस्प्रोसियम। डाइनिंग में हॉलीडे एंजॉय किया, तो हॉलीडे के एचओ, एचओ से आपको याद रखना होगा हॉल्मियम। और एंजॉय, एंजॉय में आपको याद रखना होगा ईआर, ईआर से एर्बियम। हॉलीडे एंजॉय किया टमाटर या बिलूट के, तो टमाटर में टीएनएम आएगा, तो टीएम से आपको याद रखना होगा थूलियम। और यबी में आएगा वाई एन बी, वाई बी से इटर्बियम। और लूट के में एल यू आता है, तो एल यू से होगा लुटेशियम, या फिर लूट के से भी आपको याद आ जाएगा कि लुटेशियम। तो जॉन सेना, प्रवास एंड पैमिसिमी यूरोप के ग्राउंड टेबल डाइनिंग में हॉलीडे एंजॉय किया टमाटर या भी लूट के। तो ऐसे आप याद रख सकते हो 4D सीरीज को। नाउ इफ यू सी द 4F, या सॉरी, सो ऐसे आप याद रख सकते हो 4F सीरीज को, सॉरी 4F सीरीज। Now if we see the 4F series in English, so in 4F we have cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium. So if you want to remember this, how we can remember? So what happened? There is a person whose name is Summer. So Summer went Europe. So that Summer, he is actually ceramic producer and promoter. So he was in charge of a big project. In that project, they had to make a great turbine. So in that project in charge, Summer, he went Europe and he gave the project charge to his juniors. He said that I'm going for a few days. You guys please manage. So what happened? When the boss is not there, the employees will not work properly, right? They will just reluctantly try to finish their job without paying attention to the details. So same thing happened when that ceramic producer and promoter Samar, when he went Europe. So there some problem happened, and in that big project where they have to make that great turbine, that in that turbine the juniors used cheap materials. Because of that, the turbine disrupted. And luckily, one honest engineer, he saw it and he yelled it and he informed everyone, no, we are doing it wrong and this is not correct.
So this will harm people. So you have to remember that ceramic producer and promoter Summer went Europe. Meanwhile, so great turbine disrupts. Honest engineer team yelled luckily. So because of this team or honest engineer team, people got saved. So in the ceramic producer, CE stands for cerium, and the producer you have PR. PR stands for praseodymium, and NND. ND stands for neodymium. Promoter, in the promoter we have P and M, or even in the if you remember this prom, so from this prom you can get promethium. So what is the name of that promoter? Summer. So from the summer you can remember samarium. Went Europe. In Europe, or from the entire Europe, you can remember europium. So ceramic producer and promoter Summer went Europe. Meanwhile, great turbine. From this great you have to remember GD or gadolinium. Turbine, in the turbine there is T and B. The TB stands for terbium, or even in the from the turbine you can remember terbium. And disrupts, in the disrupts there is D and Y. I mean you can remember D and Y, it's not there in the word, but you can remember D and Y. So dy stands for dysprosium. Honest start with H and O, so HO stands for holmium. Engineer, in the engineer we have E and R, so ER stands for erbium. Team, in the team we have T and M, so TM stands for thulium. Yield, in the yield you can remember Y and B, so YB stands for ytterbium. And luckily, so in the luckily we have L and U, so LU stands for lutetium. So ceramic producer and promoter Summer went Europe. So meanwhile people were not working properly, so that's why great turbine disrupts. Honest engineer team yelled luckily, and he saved the life of all the people. Okay, नेक्स्ट हम देखेंगे 5F सीरीज. तो 5F सीरीज में हमारे पास है थोरियम, इनको एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं. तो एक्टिनाइड्स में है थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, कुरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम. तो इन 14 एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है? तो हमें पता था कि एक मूवी आया था 2012, तो उसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड का वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा था, और उस वाटर के नीचे सारे कंट्रीज आ जाएंगे, तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कुछ था कॉन्सेप्ट. तो उसमें क्या हुआ, जब वाटर लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो तभी सभी लोग पैनिक करने लगे कि अरे अभी तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी करना है कुछ दिनों में करना है, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो जब इनिशियली स्टार्ट हुआ थोड़ा पानी इंक्रीज होने के लिए, तो थोड़ा पानी ऊपर से नीचे गिरा, मतलब थोड़ा सा ही पानी अगर ऊपर से नीचे गिरा, थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ा, तो सारे लोग तो एकदम बौखला गए. तो उसमें क्या क्या इफेक्ट हुआ ना, पुराने आम कम बिके कैलिफोर्निया में, जो पुराने आम बहुत ज्यादा बिकते थे वो कम बिके. और साइंस कम्युनिटी में क्या हुआ, साइंस कम्युनिटी में आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव नोबेल के लिए लड़े. तो ऐसे आपको याद रखना होगा कि जब वो पानी का लेवल बढ़ने लगा, सारे लोग बौखला गए, और उसके इफेक्ट में क्या हुआ कि पुराने आम कम बिके कैलिफोर्निया में, और जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, फर्मी एंड मेंडलीव, वो नोबेल के लिए लड़ने लगे एक दूसरे से कि अरे मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मरने से पहले मैं नोबेल लूंगा, ऐसा करके. तो क्या याद रखोगे कि थोड़ा पानी ऊपर से नीचे गिरा, पुराने आम कम बिके कैलिफोर्निया में, आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव नोबेल के लिए लड़े. तो थोड़ा से आपको याद रखना होगा थोरियम, पानी में पीए, पीए से याद रखना होगा प्रोटैक्टिनियम, ऊपर में आएगा यू, यू से याद रखना होगा यूरेनियम, ऊपर से नीचे गिरा तो नीचे में आपको याद रखना होगा एन एन पी, एन पी स्टैंड्स फॉर नेपच्यूनियम. पुराने आम कम बिके, तो पुराने में आएगा पी यू, पी यू से याद रखना होगा प्लूटोनियम, आम से आपको याद रखना होगा अमेरिशियम. कम, कम में आपको याद रखना होगा सी एम, सी एम स्टैंड्स फॉर कुरियम. बीके, बीके में बी एन के, सो बीके से आपको याद रखना होगा बर्केलियम. कैलिफोर्निया में, सो कैलिफोर्निया में सी एफ, सी एफ से आपको याद रखना होगा
या फिर पूरा कैलिफोर्निया से भी आप याद रख सकते हो कैलिफोर्नियम। और कौन कौन लड़े ना, आइंस्टाइन, फर्मी एंड मेंडलीव। तो इन तीनों से आपको याद रहेगा आइंस्टाइनियम, फर्मियम एंड मेंडेलिवियम और मेंडेलिवियम। तो किस लिए लड़े ना, नोबेल के लिए लड़े। तो नोबेल से आपको याद आएगा नोबेलियम, और लड़े लड़े में आएगा एल आर। तो एल आर से आपको याद रखना होगा लॉरेंशियम। तो कैसे याद रखना है 5F सीरीज को, कि थोड़ा पानी ऊपर से नीचे गिरा, पुराने आम कम बिके कैलिफोर्निया में। उस पानी ऊपर से नीचे गिरने का इफेक्ट कि पुराने आम कम बिके कैलिफोर्निया में। एंड आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव नोबेल के लिए लड़े। तो ऐसे आप याद रख सकते हो 5F सीरीज को। Now let's see this 5F series in English. So in 5F we have thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium and lawrencium. So these 14 elements we have in 5F. Now how to remember? So there is an American company UNP. So that company, or three members or three partners from that company, they actually sent black coffee to these three scientists as a token, or for showing their respect. So these three partners from this UNP company, they sent black coffee because their company produces black coffee. So they send a sample to these three big scientists. So how you can remember? You have to remember that three partners of UNP American company sends black coffee to EFM Nobel laureates. So it's very easy to remember. You can remember three partners of UNP American company sends black coffee to EFM Nobel laureates. Now this three, in the three we have TH. TH stands for thorium. Partners we have PA. So from the PA you have to remember protactinium. And UNP. What is the company name? UNP. From this UNP, these are the initials of this uranium, neptunium, and plutonium. So, because these three, in the solar system also, Uranus, Neptune, and Pluto, they are back to back. So, from this UNP, you can easily remember these three elements: uranium, neptunium, plutonium. So three partners of UNP American company. In the American, from the American you can remember americium and company CM. From the CM you can remember curium sends black coffee. So in the black coffee, in the black we have B and K. So BK stands for berkelium, and in the coffee we have C and F. So CF stands for californium to EFM Nobel laureates. Now in this EFM you have to remember that this EFM is actually alphabetical. So E comes first, then F, and after that M is so E and F, they comes before M, and then M is coming. So EFM, as we were remembering three elements from this UNP company name, similarly EFM you can remember three scientists name. So E stands for Einsteinium, F stands for fermium, and M stands for Mendeleevium. So EFM Nobel laureates. So in this Nobel we have NO, or from the Nobel you can remember Nobelium, and in the laureates we have L and R. So LR stands for Lawrencium. So how to remember this 5F series? Now three partners of UNP American company sends black coffee to EFM Nobel laureates, or this EFM stands for Einstein, Mendeleev and Enrico Fermi. So this was all in this video, and in this video we have covered this D block elements along period and F block elements along period. So the next lecture is going to be very useful, and we are going to learn a lot of things. So in the lecture 5 we are going to learn the drawing of periodic table, trick to find out period and group of a given atomic number, or of a given unknown element with atomic number. Then we are going to define isotope, isotone and isobar. We are going to learn filling of electrons,
orbit and orbital concept. And then we are going to learn Aufbau principle and how to put electrons. And this Aufbau principle we will do in a tricky way or easy way. Then we will show how to do the nomenclature of super heavy elements. And also we are going to learn trivial name of different elements, lanthanide and actinide contraction or F contraction, Slaughter's rule, determination of shielding constant, and at the end we will see Goldsmith geochemical and cosmochemical classification of elements based on chemical affinity. So these many things we are going to learn in lecture 5. So don't miss the lecture 5 because this will be very important. And in this lecture, so lecture 4, part A, B and C, so we covered mnemonics for all the S, P, D and F group elements along period as well as along group. So these mnemonics are created just for you so that it becomes easier to remember all these elements along period or along group. These mnemonics are not real facts, and if I have taken help anything that any people or any team, so those things are just to remember and the facts are not true. Whatever was discussed in these three lectures or part A, B and C of lecture 4, so all the mnemonics you have to remember that is just for to remember those elements. Those are not real facts or true facts, and I am not intending to hurt anyone by these mnemonics. If anyone feels offended, please pardon me, because these are just for the students, for the sake of students, to remember the elements quickly. So take care. Thank you for joining. See you.